one important thing that I've realized is that the marks that you've scored, that you will score in 10th or in 12th or in your college, it doesn't matter. What is the right time to start the journey in entrepreneurship, and when did you think that it's the right time for you? I think as soon as you leave your school, no, you should start. He strongly believe that after schooling, the education is shit, right? कोई काम नहीं आती है. It doesn't mean that if you're working for someone, it's wrong. People are generating wealth by doing even jobs also, especially the private jobs also. मैंने अपनी वाइफ को बोला था यार देख या तो अनुपम मित्तल इन्वेस्ट करेगा या अश्नीर ग्रोवर इन्वेस्ट करेगा. एंटरप्रेन्योरशिप है क्या यार? एक बंदा जो तुम्हारा स्ट्रीट फूड बेच रहा है वो भी तो एंटरप्रेन्योर ही है ना. टेक इट फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव, ये एक काफ़ी इम्पैक्टफुल चीज़ है जो आप कर रहे हैं. दे डोंट हैव मच रेवेन्यू एंड यू आर हेल्पिंग देम टू ग्रो देयर रेवेन्यू. अभी तक 500 से 600 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को इतने सपोर्ट किए. तो डू यू थिंक दैट you are a successful person in your life right now? I'm almost like 38-year-old young person, and I started my career in 2007. Uh, Before that, I've completed my schooling and my graduation from Delhi itself. Delhi was restricted. If you go into the Mughal era, the Delhi was restricted to only to Walled City, and then slowly and steadily it started expanded, and now has gone to NCR. So I belong to that traditional locality. Then, of course, my entire education, entire thing happened over here, college also. And after that, I started working in leading marketing companies of the world. I started my career with Publicis Worldwide. And later on, I shifted to Hakuhodo and then to WPP, which is the world's largest communication company. And after that, I decided for a briefly, I also worked as a vice president of Crores Digital, as a digital agency. And after that, I decided to start something of my own. And that was a time when I tried a couple of startups, not even couple, three, four times. I experimented with some startups, tried doing something new. And after that, I stumbled upon Raasa Karts, and we started our journey in 2022 as a very small startup, minimum viable product we prepared, and from there onwards, we know the sky is the limit. So before we talk about the journey of, building Rasa cards, going to Shark Tank, getting investment at such an early stage, let us go back to your past. I mean, who was Manik sir as a 15 years old boy or a 16 years old boy? Let's talk about that. Oh, that's a very good question that you have raised, Sagil. When I was 16-year-old, I think probably I was in 10th or 11th, and my focus, and I will say it was a bit lucky. I was a bit lucky at that time because there were no mobile phones, there were no as such laptops, internet, social media. So a lot of time used to get spent with your friends. I'm the only child of my parents, so friends played a very important role in shaping my life. And of course, it was a studious time also. You are in 10th, 11th, you have to build your career and all. But somewhere down the line, what I realized that, and what I have done at that time, and I will ask everyone, even to my kids also, that always have a, balanced time, right? If somebody, by balance, I mean you should be studying, giving focus on studies, but it doesn't mean that you completely ignore your friends or ignore the outside world. This is a big blunder that a lot of kids do, and I personally believe this should not be done. The focus should be on the 50-50 thing. The reason I'm saying this is, another one important thing that I've realized is that the marks that you've scored, that you will score in 10th or in 12th or in your college, it doesn't matter. Okay. Once you go into the real world, it will all become zero, and your smartness, your relationship, your numbers, always degrees will play an important role. But apart from that, all whatever you have learned from your friends, from your social circle, that will be extremely important. In fact, it will be the most important thing. The degrees and everything will be the last, right? Unless until you cracked IITs or IIMs of the world.
So yes, in that way, I was a bit lucky. I used to give a lot of time. I used to spend a lot of time with my friends. They all come from a different background, and you fight with them, you share things with them. So now moving ahead, you have said that you have worked with different companies and different agencies, and then you got started with your entrepreneurship journey. So does this mean Mhm. that you need prior experience in companies to work before you get started into entrepreneurship journey? Like, concluding this, I would like to ask you that what is the right time to start the journey in entrepreneurship, and when did you think that it's the right time for you? Another very good question that you have raised. I think as soon as you leave your school, no, you should start. As soon as you leave your school, not even college. So there is I don't know whether you are knew this thing. There's a Peter Thiel Foundation in USA. So Peter Thiel is one of the biggest investors and one of the biggest entrepreneurs in USA, and he takes 30 to 40 students who just passed their 12th exams, who just passed their schools in from different countries, and they groom those 40 entrepreneurs so that they can do business. He strongly believes that after schooling, the 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 education is shit, right? कोई काम नहीं आती है. So hence, that's very strongly. I also believe the same thing, that immediately after schooling, you can do side by side. You can, maybe through distance learning and all, you can keep doing it. But if you really are passionate about entrepreneurship, you should start as soon as possible. And there is a reason attached to it, because the more early you will start, the more you will gain experience, the more you will do mistakes, and those mistakes at a young age are acceptable. But once you move into your 20s and 30s and 40s, the risk taking ability goes for a toss. When was the time that you thought that it's the right time for you to take risk, and how did this idea come up of Rasa cards? I mean, there is a thing, when we go to such kind of stores and have food over there or have any kind of stuff over there, we don't think like there is some idea behind this, or like that moment we will never realize of any kind of entrepreneurial idea behind this, any kind of problem that they are facing. So, like, what was the triggering point for you that you found out the problem in this space? And it's such a big space, as you mentioned on Shark Tank. So, like, how did you get this problem? I think you have asked two questions. One is what is the right time to start, and another is the idea. I will break into these into two parts. There is no time or there is no realization to start. I was always passionate about doing something of my own. As simple as that. It doesn't mean that if you're working for someone, it's wrong. The media, the environment has created that thing that if you're not doing something of your own, then you're a lazy person, or you are a second grade person, which is completely wrong. People are generating wealth by doing even jobs also, especially the private jobs also, right? Even if you right from the day you start earning, by mean, if you start doing a job from the first day and you're doing savings, investing in SIPs, in the next 20 years you can gain an immense wealth and can retire also, right? So it's all about the passion. It's all about, if you have already decided that you have to become an entrepreneur, then you should start at 18. Else you can, there is no time, there is nothing else. Yes, but one advice I strongly give to everyone, that before you get settled down in terms of your marriage, before your kids, the risk taking abilities and everything is quite easy, right? Even if you fail, it doesn't matter. But after that, it takes a hit. So 18 to 28 is the best age to start your own business. Okay. And you So, should be single at that time. तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि शार्क टैंक पे आप कैसे पहुंचे और आपका शार्क टैंक पे एक्सपीरियंस कैसा था? तो मैं इसके लिए कहीं ना कहीं अपना जो पुराना एक्सपीरियंस था मेरा 15-16 साल का, उस पर मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा. Reason being that I was into marketing. I was very good with numbers, and I was always into the entrepreneurship. So I keep reading about this, right? Equity. It was all, वो numbers मेरे टिप पे रहते थे.
राइट, इसकी कितनी इक्विटी होती है, क्या मैं जो भी वहाँ पे जो जागन्स बोले जाता है, आई वाज क्वाइट फेमिलियर विद दैट। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 राउंड्स होते हैं शार्क टैंक में। पहला राउंड होता है जिसमें आपको सिंपल बेसिक फॉर्म भरना होता है, राइट, अबाउट योर बिजनेस एंड ऑल। एंड एज यू सेड, हम इससे 2-3 महीने पुराने थे बिजनेस के अंदर, बट स्टिल समबडी रिकमेंडेड कि भर दे, राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंटरेस्टेड नहीं था उस टाइम पे भरने को, मुझे भी लगा था कि 1-2 साल लूंगा उसके बाद शार्क टैंक में जाते हैं। बट एनीवेज, एज द लक हैव इट, हमने भरा। फिर उसके दोबारा कॉल आई हमारे को। अनदर राउंड जो होता है वो भी इंटरनेट पे होता है, बट दिस टाइम ऑल्सो उनकी वेबसाइट पे एक फॉर्म होता है। दिस इज अ डिटेल्ड फॉर्म, राइट। इसमें आपको पूरे नंबर्स दिए जाते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू हैव टू गिव अ डेमो वीडियो, एंड यू हैव टू ऑल्सो गिव योर प्रेजेंटेशन इन 3 मिनट्स, वो भी हिंदी में होती है। सो 3 मिनट के अंदर आपको किल करना होता है। सो दे जस्ट वांट टू सी कि हाउ प्रेजेंटेबल यू आर ऑन टीवी ऑल्सो। चलो वो भी हो गया, ये बात है लास्ट में की। फिर कम जुलाई, अ, इन्होंने मेरे को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर में इनकी वर्चुअल होती है, मीटिंग्स होती है, नॉट वर्चुअल, वन ऑन वन मीटिंग्स होती हैं विद द स्टार्टअप्स। दोज आर सेलेक्टेड। हमें वहां से कॉल आई और ईमेल आया कि आपको ऐसे ऐसे आना है दिस पर्टिकुलर डे। ओके, वी वेंट ओवर देयर, एंड आई वाज लीडिंग द शो। सो मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी उनको। इट वाज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, बिकॉज जब आपको अपना इंफॉर्मेशन पता होती है, जब आपको अपना बिजनेस के बारे में पता होता है, नंबर्स के बारे में पता होता है, तो इट्स वेरी इजी टू डू दैट। ये इन कैमरा रिकॉर्डिंग होती है एक रूम के अंदर, और उसके अंदर आपको काफी सवाल पूछे जाते हैं। इनकी एक इन्वेस्टमेंट टीम होती है सोनी की, जो आपसे ये सवाल पूछती है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा मीटिंग चली थी, एंड वी क्रैक्ड इट। मतलब हमें पता चल गया था कि हम मुंबई जा रहे हैं। इट वॉज आर हंच। एनीवेज, उसके बाद जुलाई, सितंबर के फर्स्ट वीक में we got a call that we have to come to Mumbai. And to be very honest, this is exactly 1 year back. Uh, we were called in. इसी हफ्ते की बात थी, 3 दिन पहले बुलाया जाता है आपको शार्क टैंक में। 2 दिन आपकी प्रैक्टिस होती है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन होती है जो आप देते हो, उसको सोनी की टीम देखती है, आपको सजेशन देती है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये पहले प्रैक्टिस होती है, और आपको एक दिन 1 घंटा दिया जाता है, 1 से 1.5 घंटा, इस प्रेजेंटेशंस को दिखाने का शास्त्र के सामने, राइट। ये 6, एक्चुअली होता क्या है, ये हर फ्राइडे सैटरडे संडे होती है, रोज नहीं होती है। और हर हफ्ते अलग अलग स्लॉट्स में लोग आते हैं, और एवरी फ्राइडे सैटरडे ये 6-6 पिचेस होती हैं, जिसमें शार्क्स आते हैं। 1-1 घंटे की पिचेस होती है, सवाल पूछते हैं, और उसके बाद आपको तो थैंक यू सो मच बोल देंगे, या आपको फंडिंग के लिए ऑफर दे देंगे। तो हमारे साथ भी यही हुआ। मैं गया वहां पे, बस मेरा एक इम्पॉर्टेंट चीज थी शार्क टैंक में, वो ये था कॉन्फिडेंस। ये 1 घंटा मेरा है, जो मैं चाहूंगा मैं वो करूंगा, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, आई डोंट केयर। एंड दैट्स हाउ वी वेंट। एंड उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपने देखा होगा, मैं गया, लगभग 1 से 1.5 घंटा मीटिंग चली। आफ्टर दैट आई वाज ऑफर्ड ऑफ 50 लाख रुपीज फ्रॉम अनुपम। सो अब थोड़ा हम राशा कार्ड्स के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका एक काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जो आपने समझाया शार्क टैंक पे। वी वुड आल्सो लाइक टू नो थोड़ा अगर आप इसको ब्रीफली ब्रेक डाउन करते हैं द इम्पैक्ट दैट इट्स क्रिएटिंग फॉर द वर्कर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो थोड़ा आप हमें राशा कार्ड्स के बारे में बताएं। पहले आप ये बताओ, आपके यहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट है स्ट्रीट फूड की? और आई मीन काफी बड़ी है, एवरीवेयर यू गो यू फाइंड स्ट्रीट फूड वेंडर्स एवरीवेयर। ओके, एंड आर दे ऑन जोमेटो स्विगीज ऑफ द वर्ल्ड? नो, दे आर नो। नॉट। ओके, ओके, ओके। सी द पॉइंट इज, हम जब दिल्ली एनसीआर में थे, ये 2020-21 की बात है, लॉकडाउन लगा हुआ था, हम बाहर नहीं जा रहे थे। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, और जब वो खुलना शुरू हुआ, मैंने एक चीज रियलाइज करी कि रेस्टोरेंट्स तो बंद थे उस टाइम पे भी, बट स्ट्रीट फूड खुला हुआ था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सागिल, मैंने ये आइडिया कहीं से लाया नहीं था सडनली, कभी शायद पॉप अप हुआ होगा कुछ खाते हुए, कुछ हुआ था, राइट। जैसे ब्रेन वेव होती है, समथिंग हैपन लाइक दिस। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, राइट, कि लेट्स सी इसको कैसे कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक
इन कस्टमर रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च। तो मैंने सोचा यार इनसे पहले बातें करते हैं, इनको पहले बुलाते हैं। लाइक मैकडोनल्ड्स हमारे घर के पास, वहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड वेंडर्स को बुलाया। मैं कहा बिजनेस बन भी सकता है, नहीं बन सकता, या मैं सोच के कुछ बैठा हूँ और ये तो कुछ और सोच के बैठे हैं। देन आई रियलाइज कि ऑलरेडी देयर इज अ डिमांड, राइट, बट दे डोंट नो हाउ टू डू दैट। दे कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, राइट। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और जो गलत चीज़ है वो बहुत एक्सप्लॉइटेशन भी होता है इनका। पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, एमसीडीज मांगती हैं, ये तो सब पूरी इंडिया में हो रहा है, राइट। तो हमने कहा इनके लिए बिजनेस बनाते हैं। सबसे पहले हम इनको जोमेटो स्विगी पे लेके आते हैं, ठीक है। उससे पहले हम इनकी लाइसेंसेस लेते हैं। उसके बाद इनको हम जोमेटो स्विगी पे लेके आते हैं। हम इनसे बहुत बातें करते हैं, मतलब क्या जरूरतें हैं क्या नहीं है। शुरू शुरू में हमने खुद ही किया, मैं ही करता था पहले। फिर जोमेटो स्विगी पे इनको ऑन बोर्ड कराया। उसका भी लॉजिक ये था कि एक बार जब थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपेंशन हो जाएगा, देन वी कैन ब्रिंग आवर ओन एप्लीकेशन आल्सो, दैट्स नॉट अ बिग डील। थर्ड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वाज, और ये हर चीज उनकी इनकम से रिलेटेड थी जब हमने बिजनेस शुरू किया। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज ग्रोसरी डिलीवरी। ग्रोसरी डिलीवरी इसलिए थी कि ये रोज अपना सामान लेके आते थे और रोज फिर बनाते थे, और उसमें उनके लगभग 1 घंटा खराब होता है, 1 से 1.5 घंटा। हम चाहते थे कि हम इनके घर पे या इनकी जहाँ पे जगह पे बनाते हैं वहां पे बनाएं, सो दैट इनके 1 से 2 घंटे खराब ना हो, वो बचे और उसकी ऑफलाइन सेल करें, राइट। कोई कोई भी बिजनेस करने से पहले एक नॉर्मल फॉर्मल रिसर्च हो जाती है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल, राइट। वी डिड अ रिसर्च एंड वी रिकॉग्नाइज कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे धंधा बन सकता है। और इफ यू टेक इट फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव, ये एक काफी इम्पैक्टफुल चीज है जो आप कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए, बिकॉज दे आर फ्रॉम अ वेरी लोअर फैमिली, दे डोंट हैव मच रेवेन्यू एंड यू आर हेल्पिंग देम टू ग्रो देयर रेवेन्यू। आपने अभी तक 500 से 600 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को इतने सपोर्ट किए, तो डू यू थिंक दैट you are a successful person in your life right now? And अकॉर्डिंग टू यू, मैं जानना चाहूंगा कि एक सक्सेसफुल इंसान को आप किस तरह मेजर करते हो? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। आई थिंक सक्सेस की यार डेफिनेशन नहीं है, मतलब स्पेशली अबाउट कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं, राइट। या मेरे या मतलब दे आर ह्यूज हाईली सक्सेसफुल पीपल, बट द पॉइंट इज वो लोग खुश नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। वो चीजें ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनका मन नहीं है करने का, बट उन्हें मजबूरी में करनी पड़ी है, बिकॉज उनको फैमिली चलानी है, ठीक है। गलत बात नहीं है उसमें। आप अपना बिजनेस कर रहे हो या अपना सेल वो जॉब कर रहे हो, 2-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 4-5 लाख, वट एवर यू आर अर्निंग, लेकिन अगर आपको उसमें खुशी नहीं है या आपको मजा नहीं आ रहा है, तो उस चीज को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना, क्योंकि नहीं तो वो ट्रैप बनता चला जाता है। तो सक्सेस की एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि जो आप चाहते हो वो अगर कर सकते हो, देन यू आर सक्सेसफुल पर्सन, as simple as that. And to me, I don't judge people on basis of their success, but I definitely judge people or respect people basis of the on of their struggles. And one person who is always come on this vision, yeah, who is highly respected is entrepreneur, ठीक है। वो जितनी चीजें झेलता है, वो जितनी चीजें करता है, किसी को नहीं पता होता है बैक एंड में कितनी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या हो रहा है। So that's the beauty of, that's what I think a successful person is. As far as if you ask me कि I am successful or not, I am happy, मेरी फैमिली है, मैं enjoy कर रहा हूँ अपनी लाइफ, घूमने जा सकता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता दूं, आपको शायद वो रियलाइज नहीं होगा लेकिन 20 साल बाद रियलाइज होगा, आई एम हेल्दी। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर सक्सेस, राइट। इतने लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज के जमाने में, इन दियर 40s, इन दियर 30s, इन दियर 50s। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और आपको कैंसर है या आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो पैसा आपके लिए कोई फायदा नहीं रहेगा, राइट। सो हेल्थ इज अनदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच आई फील की इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, समटाइम्स यू हैव मनी, समटाइम्स यू डोंट हैव, वो अलग चीज। ओके, सो लाइक health and freedom of time, happiness, all these things can be a good measure for success. Okay. Well, just one thing to add इसमें कि achievement also plays a very important role. If you see,
इंडिया इज अ वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी, राइट? स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी, नॉट वेल्थ, स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी। तो यहाँ पे पैसा दिखता है। बट अगर आप यूएसए में जाओगे, सबके पास इक्वल पैसा है, राइट? किसी का थोड़ा ऊपर नीचे होगा, सब खुश है, मतलब खुश तो नहीं है, लेकिन सबके पास इतना है कि अपने आप को अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वहां पे आके आपको अचीवमेंट्स पे हो जाता है, आपने क्या इम्पैक्ट लाया है आप सोसाइटी के ऊपर, आपने क्या करा अपने आप खुद कर, खुद ऐसा क्या करा कि जिससे मतलब पीपल विल से कि वाओ, राइट? सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में भी एक ये टाइम आ गया है, या आ चुका है, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल अचीवमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि which was your favorite shark? Like which shark impressed you the most? But here is the twist. You cannot choose either Ashneer or Anupam apart from them. तो मैं आपको एक बहुत फनी चीज बताता हूँ। शार्क टैंक सीजन 1 का जब पूरा मैंने देखा था, और जब मुझे इनवाइट आया था सीजन 2 के लिए, मैंने अपनी वाइफ को बोला था, यार देख, या तो अनुपम मित्तल इन्वेस्ट करेगा या अश्नीर ग्रोवर इन्वेस्ट करेगा, राइट? तो और हुआ यही कि अनुपम मित्तल ने करा, अश्नीर तो था ही नहीं, ड्यू टू द वट एवर रीजन दे हैव। एनीवेज, चलो ठीक है। अह, उसके अलावा मुझे लगता है जो एक बंदे ने जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया वो था अमित जैन। ठीक है, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। ही हिमसेल्फ कम फ्रॉम अ सेकंड ईयर टाउन, जयपुर से आए हैं। और उन्होंने वहां पे डिसाइड किया, मुझे एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने जयपुर में ही अपना बिजनेस शुरू किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर इंडिया को एक्चुअली में बहुत ग्रो करना है, स्टेबल ग्रोथ चाहिए, तो उनको स्मॉल टाउन्स के अंदर भी एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए। अभी हो क्या रहा है, या तो दिल्ली या मुंबई या बैंगलोर या फिर आपका कोलकाता या चेन्नई। जब भी आप देखोगे कोई भी बड़ी कंपनी होगी, वो इन पांचों में ही अटकी रहती है सिटीज के अंदर। एंड आई रियली वांट कि कल को आपके यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी हो, कहीं किसी और शहर में कंपनीज हो, जो बड़ी कंपनीज हो, राइट? तो इसलिए मुझे अमित जैन ने काफी अच्छे सवाल भी पूछे थे। वो समझ गए थे मेरा बिजनेस आइडिया, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, बट शायद लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो उस टाइम पे उनको मैं समझा नहीं पाया, hence he backed out. But yes, I personally found him very impressive among all the sharks. सो अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल में एंटरप्रेन्योरशिप की वेव किस लेवल पे होगी इंडिया में? यार, एंटरप्रेन्योरशिप की वेव हमेशा रही है। ये थोड़ी सी ग्लैमरस कर दिया है इसको पिछले 5-10 साल में, बट वो हमेशा रही है। 1950 में भी लोगों ने बिजनेस शुरू किए थे, 1960 में भी करे थे, 1970 में भी करे थे, 80 में भी करे थे। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? यार, एक बंदा जो तुम्हारा स्ट्रीट फूड बेच रहा है वो भी तो एंटरप्रेन्योर ही है ना। वो छोटा है बस, उसकी ये बात है, लेकिन वो कर तो अपना बिजनेस ही रहा है ना, अपना धंधा ही तो कर रहा है ना। जो बड़ा बंदा हो जाता है उसको आप बड़ा एंटरप्रेन्योर बोल देते हो, बस उसकी और कोई डेफिनेशन नहीं हो, ये हमेशा से रहा है। बट अ गुड पार्ट इज दैट कि अब एक्सेप्टेबल होता जा रहा है मिडिल क्लास में। पहले वो मिडिल क्लास में एक्सेप्टेबल नहीं होता था। पहले होता था, अरे बस आपने 18 साल के बाद एमबीए करी, कॉलेज किया, एमबीए करी, उसके बाद आपको जॉब में ही जाना है। वो चीज अब खत्म होती है। लोग अब ये अप्रिशिएट करने लगे हैं कि आप अगर फेल भी हो रहे हो तो उस चीज को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, राइट? इनफैक्ट उस चीज को ज्यादा बेटर माना जा रहा है कंपेयर टू अ जॉब। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये होना ही होना है। ये भी हो सकता है कि आप देखोगे 5 साल बाद लोग अपने आप ही एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर देंगे। एंड एज आई सेड, एंटरप्रेन्योरशिप एक पैशन होता है। ये कोई करियर नहीं है कि आपने पहले कॉलेज की ग्रेजुएशन करी, फिर आपको एमबीए करनी है, या आपको इंजीनियरिंग के बाद कुछ करना ही है, राइट? तो ये एक पैशन है। मन करता है करो, नहीं करता है तो जॉब में करो, जॉब में लगे रहो। और लेकिन हाँ, जिस हिसाब से माहौल है इस टाइम पे, 18 से 19 साल के जो बच्चे हैं, जो पहले ये सोचते थे कि मैं अब इस कॉलेज में जाऊंगा और इस कंपनी में जॉब करूंगा, अब वो ये कहते हैं कि अब मैं शायद अपना नया धंधा बनूं, विच इज अ वेरी गुड थिंग विच इज कमिंग। अच्छा, अनदर थिंग आई वांट टू ऐड। पहले गर्ल्स जो थी वो सिर्फ जॉब तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी या घर पे ही रहती थी। नाउ विद थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, people from even from small towns or from even big towns, girls have started coming in the entrepreneurship, which I personally believe is huge, right? वो अपने घर से भी बिजनेस कर रही है, घर से बाहर नहीं स्टेप आउट कर रही है, और उसके बाद भी बहुत पैसा कमा रही है। ऑफ कोर्स बाकी लोग भी अपने बिजनेस कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, और आने वाले टाइम में और भी ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। So my last and final question, and also the most important question for what we are basically doing this podcast, is for the youth of India.
सो मैं हम्म। आपसे कुछ मैसेज लेना चाहूंगा उन सारे यूथ के लिए जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, या बाद में जो लोग इसे देख रहे हैं 1 साल 2 साल बाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए? और सक्सेसफुल इंसान, जैसे मैंने बोला कि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट आई थिंक जो भी करो बहुत डिलीजेंटली करो, ठीक है। दूसरा, एंजॉय करते हुए चेक करो, राइट। ज्यादा सीरियसनेस नहीं लेनी है लाइफ में, फन करते हुए लाइफ को जीना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि आप आगे रहोगे कभी। एक वो मत बना लेना हुआ कि मेरे को हमेशा जीतना ही जीतना है। वो लाइफ में कभी नहीं हो सकता। वो नेचर ने ही ऐसा रूल बनाया है कि आप हमेशा जीत ही नहीं सकते हो। सचिन भी जीरो पे आउट होता है, सचिन ने सेंचुरीज मारता था। विराट कोहली भी कभी कभार जीरो पे आउट होता है और कभी कभार वो सेंचुरीज मारता है। ये लॉ ऑफ नेचर है। सो डोंट गेट अपसेट, बट यू आर नाउ लिविंग इन दैट काइंड ऑफ अ कंट्री जहाँ पे इफ यू डू हार्ड वर्क ऑनेस्टली डिलीजेंटली, success will come. 10-20 years back it was very difficult even after doing a hard work in India, but now a lot of wealth has been generated. Hence keep doing something innovative, come up with some different things, do hard work, life is sorted. ओके, सो थैंक यू सो मच मानिक सर फॉर द अमेजिंग टाइम जो आज आपने दिया हमें। आज की ऑडियंस काफी कुछ सीख के जाने वाली है, आई एम श्योर, फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सो एंड वी होप टू डू दिस अगेन, दैट व्हेन यू हैव 50,000 1 lakh vendors, again we'll come to this podcast and share the journey of how did you get to that level. So Uh, thank you so much sir for this amazing time, and yeah.